this is a case of acting unfairly. They've acted unfairly. Mr. Siddiqui, you said that word quite a few times. Please now. Bilkul. I move on to my second point. No, I have a question. Ji, sir. So we are bound by the interpretation of the Election Commission. Is that No. Is this a rule of interpretation? No. That is not my. Wait a second. Ji. Are you want us to take judicial notice of this fact? No. That is Why not are you my- referring to it? I am referring to because I'm showing to you. And last and Ji. not least, if at all, who would have this seat gone to? Let's assume BAP is not there. So if you want us to open up the elections of 2018, we can do so, but you cannot just pick an isolated incident and tell us that it's binding on the Supreme Court or that is the correct interpretation of the Constitution. That's a very novel way to argue a case. My lord, that is not my argument. All I'm trying to show is the arbitrariness Hey, forget and the that. unfairness Why of don't the you election. attend to the case? But that is all I'm trying to show. My second example of being unfair and arbitrary. They're most unfair. Let's assume that. So will that change the interpretation of the Constitution? Because your lordship has again because your lordship has again and again said, why should we intervene? One of the reasons why your lordship should intervene, if your lordship see that there is a kind of institutional hypocrisy at the heart of the Election Commission, they are discriminating against certain parties, that would be a ground for 2018 के इलेक्शन थे वो सही थे. Then go there, then don't open these boxes which will embarrass you. We are looking at this. So let me come to my second argument. The second argument is, my lord, their example that the reason why we should not be given reserve seats as far as non-Muslims are concerned is because there is this clause in our constitution which says that minorities cannot be admitted. Now, this is what the ancient Greeks classically. ये तो रीजन नहीं थी, ये तो उन्होंने यहाँ का बताया. Neither in This is the not the reason in the impune order of the election नहीं commission. है, They have बिल्कुल only आपने सही कहा. वो issue लेकिन नहीं सर है. ये शो करता है कि देखिए ये वो एंशियंट ग्रीक्स कहते थे कि when you can't attack the argument, attack the person. It's an ad hominem attack. तो एशियन ग्रीक्स ने आपको कहा है कि ये अपने रखे निकाल दें आप उसमें से. मैं एक example ये दे अच्छी बात है आपके हिसाब से. ये आईनी बात है. मेरे के हिसाब से अच्छी बात है. मेरे हिसाब से अच्छी बात तो नहीं है. मेरे आईनी बात है. मैंने दो प्रोविजंस आपको रेफर किए थे आइन के. जी सर, I reserve my You're not opinion. entitled to reserve to answer. No, We can reserve. my answer is no. I reserve my opinion on the issue of constitutionality. I We are don't think asking it's a your good. opinion. I don't think it's a good thing, but it shows institutional hypocrisy on the part of the. What election about yourself? Sir, JUIF की सेम क्लॉज है. मैं उसके पेज आपको दिखा देखिए पहली बात और उनको माइनॉरिटी की रिजर्व सीट दे दी है. नहीं, पहली बात उन्होंने कहा कि हमारी ऐसी कोई प्रोविजन मैं आपको दिखा देता हूँ. चलिए वो हमारे सामने. Sir, आप फैसल साहब, you try to understand this is not the ground for non-suiting you. मैं सिर्फ आपको दिखा रहा हूँ सर. This is not the ground. साहब, Election आप commission आर्ग्यू के करें order ना. में है ही नहीं ये चीज. चीजों में आप जा रहे हैं. The only not thing mentioned. is, lordship must be Okay, fine. the unfairness of the election. Why should we see the ground which is not mentioned in the impune order? ठीक, मैं सर एक पेज लिखवा दूं आपको जी. बस. CMA number 5944 of 2024. Sorry, 5914 of 2024, sir. 5914 of 2024. ये आपकी जी सर. मैं सिर्फ पेज नंबर लिखवा रहा हूं. इस पे पेज 12 पे JUIF का शुरू होता है कॉन्स्टिट्यूशन और एग्जैक्टली वही क्लॉज पेज 16 पे. एंड दे हैव बीन गिवन 1 रिजर्व सीट्स फॉर नॉन मुस्लिम्स. लेट मी मूव ऑन. कौन सा पेज है? सर, पेज 12 से शुरू होता है एंड पेज 16 पे वो क्लॉज है. उसका वो भी क्लॉज नंबर 3 है. नंबर 1 पढ़ दीजिए. जी. हर बालिग मुसलमान जमीयतुल उलमा इस्लाम का रुकन बन सकता है बेशक वो बेशर्ते वो जमीयत के अखराज और मकासद से मुताबिकत हो.
मुत्तफिक हो. Thank you, sir. Thank you, sir. Let me move on to my next point, my lord. तो आप क्या कहते हैं जमीयत को नहीं मिलना चाहिए? हाँ जमीयत को नहीं मिलनी चाहिए इसकी सीट? सर, मैं कह रहा हूँ हैव अ फेयर क्राइटेरिया. नहीं भैया आपका मौकिफ सुनना चाहते हैं. सर, मिलनी इस केस में तो नहीं मिलनी चाहिए बिकॉज दे आर नॉट इंटाइटल्ड इन टर्म्स ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन. ठीक आगे चल. But let me move on to my next point, my lord, which is I've been puzzled by the example by Justice Mansoor Ali Shah about independents winning and whether that is really a fictional example. It's actually not. It has actually happened in one of the assemblies in this case. If your lordships may kindly see CMA number 5840. प्लीज इस पे कामरान मुर्तजा साहब ने वजाहत दी थी कि ये फोटोकॉपी में मिस प्रिंट है और ओरिजिनल में ये प्रिंट ऐसा नहीं है. अच्छा. ओमिट ना करें इस बात को. जी, वो वजाहत हवा में थी, अभी तक कोई कॉन्क्रीट एविडेंस. जब आ जाएगा तो फिर मैं भी वजाहत दे दूं. मैंने ये उनकी वेबसाइट से डाउनलोड किया है और मैंने कल भी चेक किया था यही है. और कोई और क्लॉज नहीं है. कामरान मुर्तजा, टू बी फेयर टू हिम, ही सेड देयर इज सम अदर क्लॉज व्हिच डील्स विद माइनॉरिटी. देयर इज नो अदर क्लॉज. इफ आई मे come to CMA number 5840 of 2024. This is by the Election Commission of Pakistan. CMA number 5840 of 2024. The fictional example is actually not a fictional example. It has actually happened. By the way, since you're on this point of Muslim, non-Muslim, जी, you only permit Sunnis in your party. नहीं, ये तो वो नहीं है आपका नाम है, मैं इसलिए पूछ रहा सर, लेकिन ये क्लॉज कोई नहीं है. मुसलमान है जी. बाकियों को आप मुसलमान समझते हैं? नहीं सर, हम सबको मुसलमान समझते हैं. 5840. 5840 of 2024. This is by the Election Commission. जी, कौन सा पेज? Sir, page 54. जी, क्या दिखाना चाहते हैं? जी सर, ये खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में अगर आप देखिएगा, इंडिपेंडेंट्स के अलावा जिनकी 91 सीट्स थी, ये कौन सा इलेक्शन है? ये 2024 का. जो बाकी पार्टीज हैं उनको सिर्फ 18 सीटें मिली हैं इन ए हाउस ऑफ 115. व्हाट पेज? पेज 54. जी, In a house of 115, they have got only rest of the parties. you said it once. 18. उनको रिजर्व सीट्स कितनी मिलती हैं? 30. 26 वुमेन, 4 नॉन मुस्लिम. This is no longer a fictional example. It has actually happened in this case. This disproportionality. एक और पेज अगर मैं आपको दिखा दूं काइंडली, पेज 47. When it comes to National Assembly and women seats from Khyber Pakhtunkhwa, page 47. अगर पेज 47 पे देखेंगे तो नेशनल असेंबली खैबर पख्तूनख्वा वुमेन सीट्स के हवाले से PMLN 2, जमीयत उलमा पाकिस्तान 2, पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस 1. PMLN को 2 सीटों के अवज 5 सीटें मिली. What is the point you're making? Are you saying the constitution should be interpreted on the basis of fairness or by the text of the constitution? By the text, and the text says proportionate representation. That is my case before. Of the list. जी, no, आपका तो एक सीट भी नहीं है ना जी, doesn't matter. It doesn't matter. Here it's a question अगर of. आप देखिए, मुझे बार बार आपसे कह रहा जी हूँ, जी you don't even realize how conflicted you are. जी. Again, you're mentioning PTI. You are not PTI. No, I'm not mentioning. I'm Yes, you simply. are. All the points that you made so far are regarding. I am trying to show the disproportionality. और ये और clear हो जाता है by a very interesting clause in the Election Act, Election Rules 2017. अगर आप section 96 देखिए,
there is an attempt to define what proportionality is. Let's say with respect to you, does not even come within the parameters of reply. These are points they did not raise. These are points, fresh points you are ये raising. पॉइंट बार बार रेज हुआ था कि डिस्प्रपोर्शनैलिटी किस तरह है, वो मैं दिखा रहा हूँ. I will not go. वैसा साहब एक बात ये बताएं कि और ये आपने ही कॉन्स्टिट्यूशन के टेक्स्ट में कहीं ये लिखा है कि ये रिजर्व सीट जो हैं ये दूसरी पार्टीज को दे दी जाए? नहीं, हो ही नहीं सकता. मैं अगर आप रूल 96 देखेंगे, सब रूल 3, तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट लफ्ज इस्तेमाल हुआ है टू रियली शेड लाइट ऑन द टर्म प्रोपोर्शनेट. इफ योर लॉर्डशिप्स में काइंडली सी, आई विल रीड सब रूल 3 of Rule 96. If I may read. The Commission shall then declare elected to the National Assembly or as the case may be, the Provincial Assembly such number of candidates belonging to each. अगर आप वन से पढ़ लें तो फिर क्लियर हो जाएगा. जी sir. वन से. Declaration of results by the Commission. The Commission shall calculate the total number of seats won by each political party separately in the National Assembly and each Provincial Assembly in the manner specified in Rule 94, and shall then ascertain the proportion of each political party of the seats reserved for the women and non-Muslim. Sub-Rule 2. On the basis of the calculation done under Sub-Rule 1, the Commission shall ascertain the number of seats to which each political party is entitled. Sub-Rule 3. The Commission shall then declare elected to the National Assembly or as the case may be the Provincial Assembly such number of candidates belonging to each political party in order of priority in which their names appear in the list provided by a political party. अब आप लफ्ज देखिएगा. As is equal to the number of seats to which the party is entitled to under sub-rule. The word equal. Is it equal कि 18 जनरल सीट्स जीतने वाली पार्टीज को 30 सीटें मिल गई हैं? आपको तो जीरो मिले ना, तो आपको फिर जीरो मिलना चाहिए आपकी लॉजिक के हिसाब से. सर मैं डिस्प्रपोर्शनैलिटी नहीं देखिए, ऐसे तो आर्ग्यू ना करें ना. आज तो आप अपने खिलाफ सारी बातें कर रहे हैं. आप पीटीआई का केस आर्ग्यू कर रहे हैं. नहीं मैं कोशिश कर रहा आपको हूँ. तो जीरो मिला है. अकॉर्डिंग टू योर लॉजिक आपको जीरो मिलना चाहिए. नहीं, मेरी लॉजिक I have not been able to explain, but I leave it, whatever I have argued, I leave it to your lordship. My lord, one novel way of trying to justify this disproportionality, and it is quite a novel way to justify it, is on the ground that this disproportionality should be allowed on the ground of positive discrimination in terms of Article 25. Now, this argument completely misunderstands the structure of Article 51, sub-Article 6, paragraph D, which is that the right belongs to the political parties. The beneficiaries are women. This right and benefit is governed by the higher principle of proportional representation. You cannot give women seats by adopting disproportionality. It would mean that you justify the end by the means. So if I could take you to page 47 again. Yes, sir. How would you make it proportional? Sorry? What's the mistake here? Page 47 जो आपने refer किया था. Sir, अगर आप देखिएगा, 5 मिल गई ना, so how would you fix this? How would you, according to you, how would this get fixed? this will get fixed by giving the seats to Sunni Ittihad How do you Council. do the maths? जी? How do you do the maths? Sir, इनको जो disputed seats दी गई हैं, वो Sunni Ittihad Council. 6 सीटों पे 10 मिली है ना, ये आप कह रहे हो ना. टोटल रिजर्व सीट थी 10 और जो विनिंग पोजीशंस है वो डिफरेंट पार्टीज की वो 6 हैं. जी. 6 पे 10 तकसीम हुई हैं. ये आप कह रहे हैं एक्चुअल से ज्यादा. जी. तो जो disputed seats हैं, those belong to what they call independents, but they are not independents. कोई ऐसा फार्मूला है कि जिसमें बताया गया हो कि आपको इतनी जनरल सीट्स पर एक सीट मिलेगी रिजर्व सीट? अगर वो फार्मूला फिक्स है तो फिर तो बात बनती है कि
आपने 10 सीट जीती है, 10 पे आपको 1 सीट मिल सकती है। थैंक यू वेरी मच। सर जो भी फॉर्मूला होगा वो डिसप्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन नहीं हो सकता। दैट इज रूल 94 में है ना जी। मिस्टर फैसल, रूल 94 में है ना ये। जी जी अब proportional representation पे you're out of court. You are really arguing against yourself, Mr. Fazliki. I don't think you realize it. You keep saying that we accept your argument, then you don't have a case. I think that is my case, sir. But I'm sorry I have not been able to convince your lordship. I don't understand. You are saying PTI argues this case. I can understand it. अब मैं You are arguing उसी this उसी पे मैं आ रहा हूँ। अब मैं आ रहा हूँ क्यों? चलें, if you want to persist on this line. FIC का इंटाइटलमेंट तो आर्टिकल 51 के जी मुताबिक अब मैं उसी वो पे तो है नहीं, पहले वो नहीं आप नहीं establish है करेंगे वो ना। है किस तरह? Sir, if your lordship may kindly see, and this is I go back to the notifications which I had shown to your lordships. During Let me bring your conflict into sharp focus. We accept your argument and we give these seats to PTI. No, I'm not arguing that. I'm No, saying we give these. accept your argument. So you will go get nothing. No, the seats go to the parties which are in parliament. SIC is in parliament. अच्छा. जी, that is my argument. फैसल साहब, Sir, मैं जरा कमजोर हूँ argument में, I'm sorry. फैसल साहब,